Okay, so we'll start with the basic problem of linear programming. हो सकता है if you're lucky enough that you might can have this problem, ठीक है? So we'll start with this basic problem, जहाँ पे you have to solve this linear programming problem graphically, and you have to maximize this z equals to 4x plus y, subject to the constraints x plus y less than equal to 50 and 3x plus y less than equal to 90, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So question थोड़ा बड़ा लग रहा है, but the solution will be very easy. And सबसे पहले what I would do, I would explain this, I will tell you how to solve this, ठीक है? इस वाले को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सब solve कैसे करें, ठीक है? And we'll try to understand the various aspects of linear programming, ठीक है? बाद में हम लोग समझेंगे कि किन टर्मिनोलॉजी के साथ बाद में हम लोग जाएंगे और किस स्टेप को क्यों कर रहे हैं, we'll deal with that after solving this one. So okay, so सबसे पहली चीज we have these linear constraints, ठीक है? तो तुम अभी अपने लीनियर इक्वेशन के क्लास से रिवीजन से वापस लौटे हो, तो सबसे पहले प्लॉट दीज इनइक्वालिटीज, ओके? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे यू हैव 1 2 3 and 4 इनइक्वालिटीज यहाँ पे दिख रहा होगा। x plus y less than equal to 50, 3x plus y less than equal to 90 and x greater than equal to 0, y greater than or equal to 0. All right, अब सबसे पहले we'll solve these them graphically first. So let's just solve them, and we already know how to solve this. तो सबसे पहले अपना coordinate, let's just draw the graph. अच्छा, ये यहाँ पे देख लो x greater than or equal to 0, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा that on the right of y axis, ठीक है? x will always be positive, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? On the right of this x greater than or equal to 0, ये क्या कहते हैं? Right of y axis, ठीक है? Similarly, y greater than 0, तो ये कब होता है? Above the x axis, कोई भी पॉइंट लो above x axis, तो this will always give you y equals 0. तो ये this linear inequality says above x axis, this linear inequality says above to the right of y axis. तो आप what you will do, you will take the common region, है ना? Will take the common region. देखो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इन linear inequations को solve करना, मतलब वो पार्ट लेना जहां पे सारे के सारे जहां पे आप कोई भी रीजन उस रीजन से एक ऐसा इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब ऐसा कुछ करना कि एक ऐसा रीजन फाइंड करना जहां पर से जब भी कोई आप नंबर उठाओगे तो ये सारे के सारे इक्वेशंस एक साथ सैटिस्फाई हो जाएं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर x greater than or equal to 0 तो टुवर्ड्स द राइट ऑफ y है, ठीक है? एंड यहाँ पे y greater than or equal to 0 है तो above x axis है। अब आप दोनों चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे ना, तो hope this point is clear to you. So is x greater than y, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, इसको कहते हैं non-negativity constraint. Well, discuss about this later, ठीक है? इसके बारे में और precisely discuss करेंगे ये क्या है। लेकिन सबसे पहली चीज जहाँ पे भी तुम ये देखो x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, अब डायरेक्टली यही कहोगे that the graph will be in the first quadrant, ठीक है? तो चलो भाई ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। Now let's just x plus y less than equal to 50 and 3x plus y less than equal to 90 इसको ग्राफ करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सबसे पहले corresponding to this the equation will be x plus y equals to 50. अब बहुत सीधा सा है, just get the x intercept and then the y intercept. To get the x intercept क्या करो, cover up y. तो ये क्या दे देगा, this will give you the x intercept, so the point will be 50, 0. So let this be represent 50, 0. Okay. So similarly, if you cover up x, then this will give you the y intercept. So that point will be 0, 50. है ना? Very simple. So अब क्या करना है? Just join these two points. इन दो points को join कर लें. Okay. इन दो points को join कर लिया. अब इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब ये पहले this is an equation. तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? This is the point 0, 0. And this is in the lower open half plane. यहाँ पर से इस पॉइंट को यहाँ पे रख करके देख लो। So 0 plus 0 is 0. So क्या 0 plus 0 is less than equal to 50? The answer is yes. So every point in this region will satisfy this. तो आप कौन सा region लोगे? ये region लोगे। But अभी because of this आपने क्या कह रखा है? That the graph will be in the first quadrant. ठीक है? तो आप इधर नहीं आओगे। इस ये तो लोगे ही the lower region, but only in the first quadrant. उम्मीद है समझ में आ रही है बात। Okay. Now 3x plus y less than equal to 90. तो फिर से वही get the equation. So 3x plus y equals 90. अच्छा बोर्ड में लिख रहे हो तो whenever you solve this
तो जस्ट जो लाइन जिस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिख लिया करो, x plus y equals 15. So this line here, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है x plus y equals to 50. Okay, and then 3x plus y equals to 90. इस पे फोकस करें तो we'll get the x intercept. तो x intercept equals 30. तो एक पॉइंट बना लो, let's make a point 30, 0. Okay. अच्छा, then y intercept will be y, to get the y intercept, cover up x, तो y intercept is 90. तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 0, 90. This is just a rough sketch, ठीक है? Okay, so what I'll do, I'll just join these two points. इन दो points को join करूँगा मैं. I'll just join them. ठीक है? I'll just join these two points. ग्राफ उतना सीधा नहीं आया, but hope you have the feeling. अब यहाँ से फिर से 0, 0 लो. इस बार ये दिख रहा होगा that this is the line representing, this line passing through 0, 90 and 30, 0 is the line representing 3x plus y. So I'll write that here, 3x plus y equals 90. अच्छा, अब 0, 0 तो is in the lower half plane, तो let's again plug 0, 0 there. तो 0, 0 less than equal to 90, तो yes. तो this is the region. Okay, this is the region in the first quadrant. अब जरा सा गौर से देखो, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, in the first x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 in the first quadrant. ये वाली लाइन here, this वाली लाइन यहाँ पे, तो which will be the common region? This is the common region ना, ये वाला, this is the common region, ठीक है? तो इस common region के points, corner points क्या है? अब ये क्या है? You can call this, ये क्या है? This is a convex polygon, ठीक है? इसको अच्छा चलो convex नहीं कहते, let's just call it a polygon, ठीक है? तो this is a polygon, ठीक है? In fact, this is a convex polygon, and I'll tell you what a convex polygon is, ठीक है? Let's just take a polygon. This is a polygon, ठीक है? So a convex polygon is a polygon such that when you join any two points lying on it, the line joining those two points completely lie within that polygon. तो अगर ये convex polygon है, तो तुम इन पे कोई भी दो points लो, doesn't matter which two points आते, उन दो points पे जब भी तुम join करो, तो जो line इन दो points पे join कर रहा है, वो completely इसी के अंदर lie करेगा, ठीक है? So that's the convex polygon, ठीक है? अच्छा let's take an example which is not a convex polygon. ऐसा ले लो, let's take something like this. अच्छा, तो if you take, let's take any two points, इधर ले लेते हैं, इन दोनों को join किया, तो does that line lie inside this polygon? क्या ये line is line, क्या ये line जो दो points को join कर रही है इसके अंदर lie कर रही है क्या? नहीं, so this is not a convex polygon, but this is. तो whenever ये जो region है ना, this is the region agreed by all the linear equations, तो यहाँ से तुम कोई भी point लोगे, ठीक है? तो that line will satisfy this, ठीक है? तो ये तो class 11 वाली बात हो गई. This is the thing that we used to do in class 11. अब 12 में we have to take its application, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए? We need to solve the linear equation, okay? And we need to maximize this function. ये भी this is also a linear equation. इसको हम लोगों को maximize करना है. We need to maximize this one, okay? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज maximize करने के लिए सबसे पहले you need to have all the corner points, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है that this was the polygon, तो ये this was the corner point. इसका coordinate is 0, 50. Here this is 0, 0, and here you have 30, 0, and one more point was there जिसका coordinate हम लोगों को नहीं है. I don't have the coordinate to represent that point. I'll use other color, ठीक है? इसका coordinate is not known to me. Okay, this coordinate is known to me. This and this other vertex is not known to me. तो ये find करना तो is very simple. ये क्या? This is the point representing the intersection of x plus y equals to 50 and 3x plus y equals to 90. So solve this simultaneous equation to get the points. मतलब ये देखो 3x plus y equals to 90 you have, and then x plus y equals 50. ठीक है? Just solve the two. So if you subtract the two, so you'll have just subtract, not a big thing. इसको subtract करके you'll have 2x equals to 40, so x equals to 20. Clear है ये? अब यहाँ पे रख लिया तो y will be equal to 30. So this point is 20, 30. अब आपके पास सारे के सारे vertices आ गए.
the vertex, the coordinate of this vertex is 0, 50. The coordinate of this vertex is 20, 30. For this vertex, it is at origin. So 0, 0, and this vertex is 30, 0. अब तुम क्या करो? What you have to do? You have to maximize this function. ठीक है? ये function z है जिसको तुमको maximize करना है. So z equals 4x plus y. Okay, all right. And you were having 4 corner points हैं आपको. इनको नाम name them A, B, C, and D. So what was the coordinate of A? 0, 50. What was the coordinate of B? 20, 30. What was the coordinate of C? 30, 0. And D is just the origin 0, 0. Okay. So maximize करना है. क्या करें आपने? So ये 0, 50. Just plug in these coordinates inside this function. In functions, in coordinates को इस function के अंदर डाल के देखो what value you get. So if you plug in 0, 50 here, so you'll get straightforward 50. If you plug in 20 and 30, so you're going to have 4 2s are 80 and 3 30 will give you 110. ठीक है? And then 30, 0 will give you 120 and 0, 0 will give you 0. अच्छा, अब यहाँ पे what is the maximum value? Is 120. 120 is the maximum value. So this is the maximum value. Okay? तो ये जो maximum value आपने find कर लिया, तो you have maximized this linear equation. ये maximum value तुमने find कर लिया, so you have maximized this linear equation. Okay? And corresponding, and this is the point. Okay? This is the point corresponding to which you have maximized this linear equation. तो बस बोर्ड पे इतना किया, you will get your 6 marks. ठीक है? अब let's just try to understand this. ठीक है? अब now we'll get with the terminology. ये जो terminology है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आप maximize इस चीज को कर रहे हो. ठीक है? Maximize आप एक linear equation को कर रहे हो. ठीक? Excuse me, एक linear equation को कर रहे हो. This linear equation was to be maximized. Okay? So this linear, what was the main objective of this question? The main objective of this question was to maximize this. ठीक है? Maximize this equation. So this आपका objective था इस equation को maximize करना. तो इसको कहते हैं, इस function को कहते हैं objective function. The name of this function is objective function. यहाँ पे तुमने क्या? The function that you maximize is called objective function. So objective function. Okay? अच्छा, और ये सारे क्या थे? These are the linear inequalities. Okay? अच्छा, ये जो आपने function maximize किया, ठीक है? These were under the restrictions. These were maximized under the restriction of these linear inequalities. ये जो function, objective function को तुमने maximize किया, ये इसको आपने maximize किया under the restriction of these inequalities. तो इन inequalities को कहते हैं, since they are linear, तो इनको कहते हैं linear constraints. Alright, these are linear constraints. अच्छा, उनमें भी इनका एक स्पेशल नाम है, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. तो ये क्या करता है? These also represent the linear constraints. लेकिन ये जो चीजें हैं, ये आपके ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स कर देती हैं. तो these what they do, they make the graph positive. ठीक है? तो इसीलिए these are called non-negative constraints. ये जो चीजें हैं x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0, इनका नाम है non-negative constraints. अच्छा, ये जो रीजन वाला, this region that you get, ये जो रीजन वाला, this region that you get, this is the region which is agreed by all the linear inequalities. ठीक है? तो this is the region जहां से you can have possible solutions for, यहाँ पर से अगर तुम कोई भी point लो from this region right here, if you take any point, then be it any point, that point will satisfy all these 4 inequations. ठीक है? तो इस region को कहते हैं, this region is also known as the possible region. Okay? This region is also known as the feasible region. ये जो region है तुम्हारा, this region is also called the feasible region.
Why is it called the feasible region? Because doesn't matter what point you take from this region, be it any point. If you plug those points inside these inequalities, they will give you a possible solution. Okay, so this is called the feasible region. Okay, excuse me, region, REGION. Okay, excuse me there. So this is called the feasible region. Okay, all right. Now we are done with this. अब यहाँ पे आ जाए. अब ये जो vertices पे जो points मिले थे, the points that we get, these corner points, अब ये हम लोगों ने क्यों डाला? Why did we take this? Why did we plug these corner points in the objective function? So there's a theorem in the book, ठीक है? उस theorem को आपको पढ़ना है as per the CBSE norm, as per the NCERT norm. उसको आपको पढ़ना है without the proof. So it says for any objective function, if its minimum or the maximum value exists, so it exists at the corner points. Okay, so अगर कोई objective function है तो इसका अगर minimum या maximum value exist करेगा तो it will only exist at the corner points. Okay, so इसीलिए we plug and check those corner points की which point is giving me the maximum value. Okay, अच्छा, और ये जो maximum value है, that finding the maximum value is known as, ये आपने क्या किया, maximizing this. आपने क्या किया, you maximize this objective function. तो इस objective function की maximum value को find करना, ठीक है, is called maximizing this function. And this is the maximum value, ठीक है, and okay, this is the maximum value. और आप कह सकते हो, आपने maximize करना था, तो this is the optimal value. किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग दैट फंक्शन. वर्ड से सुनिएगा, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना कहते हैं. एंड फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, जो फाइंड मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू आप फाइंड करोगे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द ऑप्टिमल वैल्यू. एंड करेस्पॉन्डिंग टू दैट जो पॉइंट आएगा, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट्स योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. So we are comfortable with this